क्या बता रहे हैं आप? लेक्चर A1 से क्या बताना चाह रहे हैं? सर्कुलर है, क्या सर्कुलर है? पढ़िए ना इसमें। इसमें तो एसडीओ को ऑथराइज किया ट्रांसफर करने के लिए, तो हमें मालूम है एसडीओ इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, किसी पटवारी का एक तहसील से दूसरी तहसील में तथा एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण समय पर स्थानांतरण के प्रावधान किया जाएगा। पटवारी की तहसील में प्रथम स्थापना के समय एवं समय समय पर उसके हलके के प्रभार में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन उपखंड अधिकारी राजस्व द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब ये क्या ऑर्डर है? बैन पीरियड के बारे में क्या कहा इन्होंने कि बैन पीरियड में जो स्थानांतरण होगा, तो कहा कि बैन स्थानांतरण नहीं किया सर उसका। ये क्या किया है? ये स्थानांतरण नहीं है तो इसको तो इसमें तो स्थानांतरण ही लिखा हुआ है। जो आपने ही लगाया A1 में स्थानांतरण क्यों लिखा है? स्थानांतरण के नीचे सर जो है कि समय समय पर उसके हलके के प्रभार में आवश्यकता अनुसार, वो स्थानांतरण के कॉलम में क्यों लिखा है? फिर 7 नंबर पे पढ़िए। कलेक्टर साहब आए क्या? एसडीएम साहब आए सर। हाँ, बुलाइए ना उनको, थोड़ा समझाएं थोड़ा सा। प्रभार बस दिया सर को चैन। एक मिनट थोड़ा समझ तो लेने दीजिए, जल्दी क्या है? बताइएगा ये स्थानांतरण और प्रभार परिवर्तन में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा बताइए। कहाँ डिफाइंड है ये? तो अनडिफाइंड है सर। अनडिफाइंड नहीं होता है ये। स्थानांतरण के कॉलम में क्यों लिख रहा है शासन? स्थानांतरण के कॉलम में नहीं लिखता शासन। अगर प्रभार चेंज जो है वो ट्रांसफर की उसमें नहीं आता है परिभाषा में, दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू। उन्होंने एक आवेदन दिया प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने, आप उतने कृतार्थ थे उनसे कि उन्होंने आपने तुरंत 7 दिन के अंदर कृपा पात्र बनाकर प्रभार बदल दिया। दोनों से हल्के में सर दोनों पटवारियों की शिकायत थी सर। कहाँ है वो शिकायतें? बताइए ना, वो फाइल दिखाइए। शिकायतें कहाँ से दिखाइए? तो शिकायत मैंने पिछले आपको कार्रवाई नहीं, मुझे दिखाइए इसमें शिकायत। आपको लगाने का मौका दिया था ना। एनेक्चर क्या है शिकायत का? P4 में लगाया हुआ है। P4 में ये लिखा हुआ है ना, विषयांतर्गत आवेदक रामधनी कौल पिता बुद्ध सेन कौल द्वारा नक्शा तरमीम राम कृपाल पिता ज्ञानदत्त गुर्जर इतना सीमांकन करने हेतु लोक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आवेदन पर, किंतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा आवेदन पे ये सीमांकन का काम हल्का पटवारी करता है क्या सर? कौन से उसमें आ गया हल्का पटवारी को अधिकार? हो गया पटवारी सीमांकन करने की। कब से हो गया बताइएगा? वो पढ़िए। एक साल से ज्यादा हो गया सर। बताइए वो प्रावधान तो बताइएगा। हमको तो अभी तक यही मालूम था कि सीमांकन का काम जो है तहसीलदार करता है। अभी नया हुआ है, बताइए कहाँ है वो प्रावधान? आप दिक्कत में आ जाएंगे, अंदाज से मत बात करिएगा कोर्ट में। कहाँ है वो? वेयर इज दैट ऑर्डर? नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगा आपको आने के लिए। टीएडी नहीं बनेगा आपका। किताब निकालिए, आदेश दीजिए मेरे को 2:15 बजे। कौन सा आदेश है जिसमें कि पटवारी को नक्शा तरमीम करने के लिए और सीमांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है? लैंड रेवेन्यू कोड में अमेंडमेंट बताइएगा, अदरवाइज आई विल सेंड यू टू जेल फ्रॉम हियर इटसेल्फ फॉर मेकिंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप 2:15 बजे लेकर आइए कि भू राजस्व संहिता में कब अमेंडमेंट हुआ है और जो है हल्का पटवारी को जो है ये करने के लिए अधिकृत किया गया है, नक्शा तरमीम और सीमांकन करने के लिए। फिर तो पटवारी भगवान हो जाएगा। आप लोग क्या करेंगे वहां बैठ के? तरमीम नहीं सर, मैंने सीमांकन पर निवेदन आपने इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र नक्शा तरमीम एवं सीमांकन करने हेतु लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन, किंतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा समय सीमा में आवेदन पत्र पे कार्रवाई नहीं की गई। बताइएगा कि ये जो है सीमांकन का जो प्रमाण वो जो है अधिकार पटवारी को है। लिखिएगा श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अखिलेश कुमार सिंह, सब डिविजनल ऑफिसर देवसर डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली। कहाँ है वो? ले आइएगा ना, आप ले आइएगा। सबमिट्स दैट
there were complaints both against the petitioner and the private respondent, and he has produced copy of the complaint. He had directed the तहसीलदार तहसील बरगवा on 12/1/2024 to take action in the matter, to take disciplinary action against the patwari in the matter. Full stop. There is no mention of this fact that petitioner was transferred on the basis of a complaint. Impugned order is silent on this aspect. Impugned order dated 29/1/2024 29/1/24 है ना, does not make mention of this fact, but it says that हलकों के युक्ति क्रम में पटवारी हलकों के सुचारू व्यवस्था की दृष्टि से, लिख लीजिएगा हिंदी में, ये तहसील देवस व बरगवा के पटवारी हलकों की निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है. Full stop. Thus the LEB of complaints does not appear to be correct. Full stop. SDM is directed to produce copy of the revenue MPLRC where Patwari has been given work of demarcation as is mentioned in his DO dated 12/1/2024. He is granted time till 2:15 p.m. This will be taken up as the first case at 2:15 p.m. If he is not able to show the relevant provision in the MPLRC or the circular issued by the government of Madhya Pradesh in this behalf, delegating powers on the Patwari to carry out Simankan, that is demarcation, then consequences will follow. चलिए ले आइए, बुला लीजिएगा, 2:15 बजे आ जाइएगा. वो तो ले लीजिए ना, वो तो उसको ले लीजिए, उसको इनको क्यों वापस कर रहे हैं? कहाँ है वो ओरिजिनल फाइल जिसमें कलेक्टर ने अनुमोदन दिया है? आपसे कहा था ना लेके आने के लिए उसको. कहाँ है कलेक्टर का अनुमोदन? जी अनुमोदन नहीं सर, कलेक्टर साहब अनुमोदन उसमें लिखा है ना, आदेश में लिखा है. अच्छा, कलेक्टर साहब का अनुमोदन नहीं है? नहीं सर. ओके, ठीक. फाइल का सर पर ये ना फाइल इसको क्यों दे दिया? फिर हमको क्यों नहीं सुबह से फाइल हो पाया? ये लेट आया भाई. कलेक्टर का एफिडेविट तो 7/2 का है, क्यों लेट आए थे? ये इनको कोर्ट की इतनी इज्जत है, ये टाइम से नहीं आ सकते थे यहाँ पर? कितने बजे आए ये? तो बोल रहे लेट आए. ये तो सर आ गए थे, एफिडेविट लेट आया. एफिडेविट कैसे आया? कौन लेकर आया एफिडेविट? कलेक्टर का आए थे सर, यहाँ एफिडेविट बनवाए. एफिडेविट बनवाया, फिर एफिडेविट सब साइन करने के लिए सर साहब के पास में भेजे. फिर कब आया वो एफिडेविट? सर एफिडेविट लेकर के सर 11:30 बजे तक हुआ है. कौन आया है? वहाँ सर स्टाफ बुलवाए. चलिए फाइल करिए, इनको दीजिए, देखते हैं. परमिशन भी दीजिएगा फाइल करने की. प्रावधान लेकर आइएगा जरा. आइए.
चलिए, तो ये तो फिर पीनल ट्रांसफर हो गया ना, ये कंप्लेंट पे किया गया था, लिखिएगा। श्री अखिलेश कुमार सिंह has produced gazette notification dated 20 दिसंबर 2022, namely मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता within bracket द्वितीय संशोधन bracket close विधेयक 2022 full stop. As per this gazette notification, in terms of the provisions contained in section 129 of the Land Revenue Code 1959 in the matter of demarcation, it is provided that Tehsildars appoint revenue inspector or city surveyor for carrying out the demarcations. Full stop. With a view to expedite the proceedings, a decision was taken that after making appropriate amendment in section 129, patwari be added along with revenue inspector and city surveyor. Full stop. When was this amendment carried out? In 129, section 129. तो निर्णय लिया गया कि 129 में संशोधन किया जाए। ये संशोधन कब हुआ? 129 में है? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कहाँ है 129 का संशोधन? आ गया है 129 में संशोधन नोटिफिकेशन आ गया। 129 के संशोधन का कहाँ है वो नोटिफिकेशन? He has produced the gazette notification amending section 129 of the MPLRC. They are taken on record. Next. As per the contention made by Shri Akhilesh Kumar Singh, Sub-Divisional Officer, that petitioner was transferred from Halka Ujjaini to Jogad on account of certain complaints as were received by him against said patwari is when taken into consideration, then the transfer order, though makes a mention of the fact that it is on account of administrative requirement, but that part is factually incorrect in terms of the statement made by the concerned SDM. Full stop. The order of transfer in terms of the statement given by Shri Akhilesh Kumar Singh, Sub-Divisional Officer, becomes penal in nature. Full stop. The law in regard to penal transfer is very clear. इसके आगे मैं लिखा दूंगा. Transfer is hereby quashed. Petition is allowed and disposed. क्या कर सकते हैं? penal transfer आपके SDO साहब कह रहे हैं, उनको बताइएगा कि नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये मालूम होना चाहिए उनको. चलिए. In fact, as per the several judgment of this honorable court, it does not come under the purview of. ठीक है, ठीक है. ये जो इसमें ये भी लिख लीजिएगा. श्री द्विवेदी के द्विवेदी submits that this will not come within the purview of transfer. However, वो दीजिए, आपका एफिडेविट दीजिए. आगे इसमें फाइल में लगे. हाँ एफिडेविट. I am placing reliance. हाँ दीजिए ना प्लीज, उसको भी लिखाएंगे. I am placing reliance upon the judgment of this honorable court, my lord. दीजिएगा. Lord, this is reported in 2016 SCC online MP, my lord. In which, my lord, it has held, my lord, that only this is reliance on the judgment of this court in Balram Dhakar versus State of MP and another
Para 5 of this judgment. 2016 SCC Online MP 12002, wherein it is held that mere change of charge from one patwari halka to another cannot be termed as transfer in terms of the definition brought to the notice of this court by the learned counsel for the petitioner. Full stop. However, facts are that respondent state has produced copy of Gazette notification dated 22nd October 2020 as Annexure A1 along with the affidavit of the collector Singrauli. Full stop. In this Gazette notification notifying भू अभिलेख नवीन भू अभिलेख नियमावली भाग 1, भाग 2 with effect from 22nd October 2020 in chapter 1 at serial number 7 transfer is mentioned and it reads as under. मतलब दूसरा जजमेंट जो दिया है उसको ये भू अभिलेख नियमावली को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने वो भी देख लेंगे, वो भी लिख लेंगे. ठीक है, थैंक यू. जैसे फुल स्टॉप. इन व्यू ऑफ, अब बीच में ना बोलिए प्लीज. उसको 7 को कोट कर दीजिएगा, पेज 9 पर है ये एफिडेविट की. ठीक है, फुल स्टॉप. 10 when change of charge from one halka to another has been considered and defined under the definition of transfer, then the order passed in 2016 on October 2016 will have no application in view of the amended Bhu Abhilekh Niyamavali. Next paragraph. At this stage, Shri K.K. Dwivedi places reliance on the judgment of coordinate bench in Pradeep Sharma versus State of Madhya Pradesh and others 2022 SCC Online MP 565 and also in case of Rajesh Singh Tomar versus State of Madhya Pradesh and others 2020 SCC Online MP 3041. Full stop. As far as judgment in case of Rajesh Singh Tomar is concerned, that is prior to the notification in and Rajesh Singh and Pradeep Sharma are concerned, they were decided respectively on 1st July 2020 and March 29, 22, whereas the amended Bhu Abhilekh Niyamavali was notified on 22 October 2020. ये प्रदीप शर्मा वाले में ये कोटेड है मतलब आ रहे हैं भैया, अब लिखाने तो देंगे वकील साहब जी. 24 आप भी लिखाने देंगे कि नहीं लिखाने देंगे? जी, आई एम सॉरी. सिर्फ उसको ब्रजेश तोमर वाले को करिएगा. इस कंसर्न इट वाज नोटिफाइड ऑन 20 अक्टूबर 2020. नेक्स्ट पैरा. As far as law laid down in case of Pradeep Sharma is concerned, though learned counsel for the petitioner submits that the said provision has been quoted in the judgment, but perusal of the judgment reveals that the coordinate bench had quoted the Bhu Abhilekh Niyamavali Bhag 1 issued by the Revenue Department on dated 24/5/2018, whereas the new Niyamavali, which is in force at the time of affecting transfer of the present petitioner and the private respondent, was notified on 22 October 2020 and transfer has been made in terms of the said Niyamavali as is submitted by the collector in his affidavit to point out that transfer can be made by the subdivisional officer in the form of change of charge from one halka to another. Next paragraph.
Full stop. Honorable Coordinate Bench has not held that that the change of charge from one halka to another will not fall within the definition of transfer, but in para 8 of the judgment it has held as under, within inverted commas 8 dot, perusal of clause 5 within bracket स्थानांतरण हिंदी में है bracket close, indicates that SDO can very well, as per requirement, change halka of patwari in a tehsil from time to time. Full stop. Not only this, since clauses are in respect of qualification and penalty related instructions for patwari, comma, therefore it was expected from the petitioner that he must have gone through the same, but by ignoring the same, comma, plea of petitioner does not stand to law and logic both. Full stop. There is no whisper in the said judgment that change of halka will not be part of the definition of transfer as is given in para 5 of the policy of 2018, which is an identically worded as is given in the definition of 2020. Full stop. In fact, the Coordinate Bench has held that transfer is an incident of service and no one, much less petitioner, has any vested right to be posted at a particular place of posting, and therefore in that backdrop it has refused to show indulgence in the matter of judicial review of the transfer. But therefore the plea raised by Shri K.K. Dwivedi, that Coordinate Bench has held that change of charge from one halka to another will not be termed as transfer, is not made out from the judgment rendered in case of Pradeep Sharma. Full stop. Thus, when transfer is defined and change of halka also amounts to transfer, as has been admitted by Collector Singrauli by quoting relevant provision of the policy, then transfer being stigmatic on account of receiving certain complaints and then without inquiring into such complaints and giving an opportunity of hearing to the petitioner in regard to the allegations made against him will be a stigmatic transfer order, and therefore such stigma cannot be allowed to be continued to attach to the petitioner. Full stop. Transfer order is quashed. Respondents will be free to conduct departmental inquiry against the petitioner and take action in accordance with law. हाँ जो भी है In this plot, sir,